Welcome back, friends. So, now we will discuss human reproduction. So, in case of human beings, as the reproduction involves a different a complex procedure. Okay, Kona? Now, first of all, we have to know that human beings are dioecious. Human beings are dioecious. Ortho kona? Now, human beings shows sexual dimorphism. Mane, it's clear to distinguish a male individual from a female individual. Okay, and human beings especially, they reproduce sexually. Since they reproduce sexually, there is the formation of gamete and fusion of gamete. These gametes are the precursor for the formation of a complete individual. Okay, so first of all, the human reproduction involves 6 basic steps. The first one is the gametogenesis. Okay, second is the insemination. Next is the fertilization. Then implantation. And then is the gestation. And last is the parturition. Okay, so gametogenesis, the name itself describes it. देखो, gameto means gametes, genesis means synthesis. First of all, the first step of reproduction is the synthesis of gametes. Okay, the male gamete, that is the sperm, is produced in the male individual, and the female gamete is produced in the female individual. Okay, so the insemination is the sperm, that is the male gamete, is motile, but the female gamete is non-motile. So the male gamete is released or ejaculated and it enters to the vaginal tract. Okay, so the ejaculation of the sperm or the release of the sperm is known as insemination. Okay, once they are released into the vaginal tract, they travel to the oviduct. Okay, there in the oviduct, the sperm or the male gamete fuses with the female gamete. Male gamete cast the fuse of female gametes the fuse of, and that produces a zygote, and the process is called fertilization. And fertilization ପରେ କ'ଣ ହେବ, zygote again divide ହେବ, mitotic division ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯାଇକି implantation ହେବ, uterine wall ରେ ଯାଇକି female ର uterine wall ରେ ଯାଇକି attach ହେଇଯିବ, that is known as implantation. Okay, implantation ପରେ କ'ଣ ହେବ, gradually that zygote will develop into an embryo. Embryo को grow कला ପରେ से fetus ହେବ, fetus ରୁ again that fetus will grow up to a certain period. Complete development hela jaye fetus grow kariba within the uterus. Okay, and that period is known as gestation. That is known as gestation. And after the gestation period, the baby will be delivered. Okay, that is known as parturition. Bujhela? So this is the common steps of reproduction or basic process of reproduction. But ये सब जानिबा आगु आमको आइडिया थे पे हबो जे what is the reproductive system, what kind of reproductive system are found, and what are the reproductive organs that जोरा की required होची, जोरा की help करची in making the process more successful. This is CHSC science classes with you with the topic the human reproductive system. Okay, so we will discuss now what are the reproductive system, how is the reproductive system designed in case of male and female, and कौन कौन reproductive organs participate करुछंती and help करुछंती reproduction रे. Okay, to make the process more successful. First,
आम फोकस करवा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम will produce the male gamete, that is the sperm. Okay, jemti sperm hoji small in size, that of compared to jemti jodi ame compare kariba ovum and sperm ko, sperm is a smaller in size and motile because ova move kareni. ova synthesize हुए female reproductive system रे, synthesize होला परे से सेठी थाए sperm जाइके fuse हुए ova सहित. So the male gamete is motile, but the female gamete is non-motile. Male gamete is small in size as compared to the female gamete. Okay, these male gametes are produced in the testes. So how the male reproductive system is designed? Male reproductive system केमती design हेची to support the synthesis of gamete and the transport of gamete. Okay, so first of all, the reproductive organs that help in the process divide into two categories: the primary sex organs and the secondary sex organs. Primary sex organs ro kamo kon na semane gamete synthesis karibe and male sex hormone synthesize karibe, that is the testosterone. Kon seta testosterone. So the male gamete is sperm. The sperm is synthesized and the testosterone hormone is synthesized. Okay, so a kamu hochi kahara na the primary sex organ, but the secondary sex organ doesn't take part in sperm or the gamete formation. Mane secondary sex organs se mane gamete synthesize karibeni. semananko kamu hochi जेतबे sperm synthesize हे गला ताको transport करेबे, तार fertility maintain करेबे and ताको nutrition media provide करेबे. Okay, for that first of all देखिबा the primary sex organ केमती से कोन करछि. This is the testis, which is oval in shape. Okay, oval in shape and are held outside the abdomen. In case of elephant it is intra-abdominal, माने abdominal cavity रे ही थाए, but in case of human beings the testis is placed outside the abdominal cavity. कहेंगे testis टा कहेंगे abdominal extra abdominal in case of human beings? Because viable sperm production पाइन जो temperature required हुए, that is body temperature, normal body temperature रो कम. That's why these testes are placed outside the abdominal cavity within a scrotal sac. This is the scrotal sac or the scrotum. Okay, within the scrotum normal body temperature ru 2 degrees Celsius कम temperature provide करे जोठी की viable sperm production हुए. Okay, and these are produced from the germinal epithelia. Internally line होता है germinal epithelia. So actually this testes ro आमे histological structure discussion करिबा तबे detail रे मु कहिबी ना how they are the sperms are produced. So this sperms जो synthesize हे गला that has to be transported again. So for that through this vas efferents they will samane jibe ka agote ko epididymis ko. This is the epididymis. So the release of sperms or male gamete is ejaculation. So before ejaculation the temporary storage of sperm occurs in the epididymis. Note it down. Okay, the temporary storage of sperm occurs in the epididymis. So epididymis रे कौन हुए again? जितेबेले ejaculation हुए सेतेबेले कौन हुए? From this the sperms will travel to the vas efferents. एटा होची हमरो vas efferents. देखि पड़छ? This is the vas difference. Sorry, that is vas difference. Vas difference नहीं कि आसीबो to the epididymis. Epididymis रो नहीं कि जीवो vas difference. Vas difference carry कला परे सी जाई कि merge करिवो with the duct of seminal vesicle. Okay, seminal vesicle is a gland. से कोन गोटे gland जे तारो fluid provide करिवो to the for the transport of semen, for the transport of sperms. Okay, तो
seminal vesicle join karibo to the duct, seminal vesicle duct सहित. So ଯେତେବେଳେ they both will join, they will form the common ejaculatory duct. They will form the common ejaculatory duct. So this common ejaculatory duct, a pair of ejaculatory duct will join to the urethra in the prostate gland. Okay, so prostate gland secretion nabo, bulbourethral gland secretion nabo, and from the seminal vesicle along with the sperm makes the semen. Semen kona? It is a fluid or viscid fluid that will carry that is composed of the sperms and the secretion of vas deferens and the seminal vesicle, bulbourethral gland and the prostate gland. Together they will make the semen, and it is alkaline in nature because sperm cannot survive in the acidic media, and the glands, they will provide the alkaline media through the secretion of those fluids. Okay, understood? So this is the common pathway na kemti sperm ta produce hela au kemti se transfer hela gote overall idea. Then this epididymis and the testis together is called testicle. What is that? Testicle. Okay, so one by one ame discussion kariba na how the sperms, the gametes are produced from within the testis and how they are how they are ejaculated. Okay, stay tuned. Actually, in the embryonic stage, male individuals रे testis produce हुए inside the abdominal cavity. Okay, कोड तैयारी हुए in the embryonic stage से तैयारी हुए develop हुए inside the abdominal cavity, but later on it descends to the scrotal sac or the scrotal cavity. Scrotum को परे से descend हुए. Okay, sometimes इमती भी हुए किसी individuals रे the scrotum or the testis fails to descend, causing an abnormality that is called the cryptorchidism. Abnormality को कौन करबे? Cryptorchidism. Okay, so किंतु एमती नुह जे scrotal sac और abdominal sac भितर किसी connection न था, because there is a connection, good connection develop हुए between the scrotal cavity and the abdominal cavity. Scrotal sac और abdominal cavity को जे connect करे, that is the inguinal canal. कौन सेटा? Inguinal canal. तो inguinal canal later on कौन है जे? Close है जे. Any damage to the inguinal tissue causes inguinal hernia. Hernia माने bulging out. So sometimes कौन वे से bulge out ही जाए intestine to. Okay, तो मन रखो इधर जिनस जेहेतु CHSC board रे MCQs question आसे एटा exam point of view रे important. If the testis fails to descend to the scrotal sac, the abnormality is called cryptorchidism. What is that? Cryptorchidism. And if the any damage to the inguinal tissue will cause the inguinal hernia. Okay, so जेहेतु टेस्टिस हमें भी देखिले ना how माने different केमती overall idea male reproductive system रे केमती gamete synthesize हुए and transport हुए, but gamete जो synthesize हुए it is माने inside the testis also गोटे complex structure अच्छी जोठी sperm production हुए. So first of all the scrotum जो बस scrotal sac जोटा कि enclose करे रखे था testis को is internally divided into two compartments. Internally it is divided into two compartments and each compartment रे गोटे testis था. So a pair of testis is held by the scrotum. Internally it is divided by the septum or the scrotal septa, and externally it is marked by a scar. Internally it is marked as a scar, that is the raphe. What is that? Raphe. Okay, note it. Then
जो आमर स्क्रोटल सेप्टम जो डिवाइड कर देला इनटू टू कंपार्टमेंट, ईच कंपार्टमेंट रे वन टेस्टिस थाए एंड दिस टेस्टिस रो तीनटा प्रोटेक्टिव लेयर थाए. टेस्टिस हैज 3 आउटर कवरिंग्स. तो जेकोसी गोटे सॉफ्ट बा डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने आमर मेम्ब्रेन्स थाए. सिमिलरली टेस्टिस को मध्य तीनटा लेयर सराउंड करके प्रोटेक्ट करंती. द प्रोटेक्टिव लेयर्स कौन कौन? The first is the outermost layer is the tunica vaginalis. The outermost layer tunica vaginalis. The second layer is the tunica albuginea. And the third is the tunica vasculosa. Okay. So what are the 3 layers that protect the testis? Tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vasculosa. And among the 3, the innermost layer, the tunica vasculosa, is richly supplied with blood vessels. Okay, so highly supplied the blood vessels are called tunica vasculosa. Okay, so the testis को again tunica albuginea कौन करे divide कर दिया into 200 to 300 compartments by lobules. कितना ना the tunica albuginea के tunica albuginea divide करे the testis into 200 to 300 lobules and each lobule contains 2 to 3 seminiferous tubules. कौन contain करता है? Seminiferous tubules. So see, so this is the diagram and it देखो ये divide करुची into the lobules. एमती 200 to 300 lobules तैयारी हुए in each testis and the देखो एटा होचे हमरो lobules or the compartments. Within this, these are the seminiferous tubules. Okay, तो seminiferous tubules coiled है किता है व convoluted है किता है and internally से मने lined है तंदे by germinal epithelia. किम्त लाइन तंदे कहा जरा की लाइन कर तंकु epithelial layer, germinal epithelial layer. Okay, so this seminiferous tubules will produce the sperms or the male gamete. Okay, so देखो again suppose this is the layer seminiferous tubule the TS. तो एडा होचे suppose हमरो cells एठी हमरो थाए दुई प्रकार सेल्स देखियो को मिले जनरली मु कंप्लीट मु जस्ट आइडिया लेबी ओके सो मोस्टली हमारा seminiferous tubules मुझे इम्ती कहली convoluted tubules and they are lined by germinal epithelia. तो देखो seminiferous tubules से दो टाइप रो सेल्स देखा जाए. गोटे होचे हमारा germ cells आ गोटे होचे Sertoli cells. कौन कौन? One is the germ cell and another is the Sertoli cells. तो germ cell माने that will produce the gamete, all the male gamete. Okay. जेहेतु हम male reproductive system पढ़ुचे, here the germinal epithelia will produce the male gamete. Again, this is the germinal epithelia. Okay. Germinal epithelia. And this germinal epithelia first तैयारी कला spermatogonia. कौन तैयारी कला? Spermatogonia. Spermatogonia will develop to form spermatocyte. कौन तैयारी कला? Spermatocyte. And this spermatocyte will again then form spermatids.
and finally these are the spermatozoa. Okay, note it down because it's important. देखो जर्मिनल एपिथेलिया, जर्मिनल एपिथेलिया तैयारी कला कौन ना स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होकर तैयारी करिवो स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट will form spermatids and spermatids mature होकर तैयारी करिवो spermatozoa or the sperms or the male gamete. Okay, so एटा कोठी हुए ना सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रे. तो मु कहली सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रे दुई प्रकार सेल थाए, गोटे होचे हमर जर्म सेल आ गोटे अछि हमर सर्टोली सेल्स. तो जर्म सेल रो काम तो जानिले मेल गैमेट सिंथेसिस. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सर्टोली सेल्स? ओके, तो सर्टोली सेल्स कोन करे, नरिशमेंट प्रोवाइड करे कहा को ना मेल गैमेट को. ओके, इट जो गैमेट सिंथेसाइज हला दिस स्पर्मेटोजोआ पूरा एम्बेडेड हेकी थाए द हेड्स स्पर्मेटोजोआ. मु जतबेले आमे गैमेटोजेनेसिस पढिबा डिटेल स्ट्रक्चर आमे देखिबा ना केम स्पर्म और ओवम रो स्ट्रक्चर को केमती. सो ए जो स्पर्म हेड थाए सेटा सर्टोली सेल्स रे अटैच्ड हेकी थाए एंड से नरिशमेंट कहा टू आने, न्यूट्रिशन कहा टू आने फ्रॉम द सर्टोली सेल्स. ओके, सो दीज आर द सर्टोली सेल्स. Okay, so this Sertoli cells are large in size as compared to the germ cells and they provide nourishment to the sperm cell. Okay, so this idea है कौन ना seminiferous tubules. तो seminiferous tubules sperm production पर again ताको transfer मध्य करिवार अछि ना. तो for that this seminiferous tubules connect हितिबे कहा को to the रेटर टेस्टिस. कहा को कनेक्ट हेतिबे रेटर टेस्टिस. सो देखो एटा होचे हमरो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एंड दिस आर द दिस इज द रेटर टेस्टिस. ओके, दिस इज द रेटर टेस्टिस एंड रेटर टेस्टिस थ्रू किछि कोन बाहर छी डक्टिल्स बाहर छी, इफरेंट डक्टिल्स बाहर छी जे कि ताको कैरी करछि टू द एपिडिडाइमिस. एटा होछि हमर कोन एपिडिडाइमिस. ओके, सो these are the efferent ductils. Okay, so this efferent ductils will carry the sperm from the रेटर टेस्टिस टू द एपिडिडाइमिस. ओके, तो एपिडिडाइमिस रे कौन हम, तो एपिडिडाइमिस रे टेम्पररी स्टोरेज ऑफ व्हाट स्पर्म्स विल अकर. ओके, एंड मन रखो रेटर टेस्टिस इज लाइंड बाय क्यूबोइडल एपिथेलिया. व्हिच एपिथेलिया? क्यूबोइडल एपिथेलिया and they contain cilia because एटी जो थाए स्पर्म एबी जाए नॉन मोटाइल है कि थाए तो ताको सिलिया प्रोपेल करे कि आगु को नबारे हेल्प करे. ओके, सो रेटर टेस्टिस रो गला पर एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस रे तीनटा रीजन था. दिस इज द अपर रीजन इज द कैपेट, द बॉडी रीजन इज द कॉर्पस एंड द टेल रीजन इज द कॉडा. एपिडिडाइमिस रे तीनटा रीजन अछि. द head region is the caput, the body is the corpus, the tail is the cauda, and epididymis madhya coiled hai and this is also long coiled tube. The function kona epididymis ro first thing is temporary storage of sperm until ejaculation. जेतबेले ejaculation time रे madhya it will help them to carry from the retor testis to the vas deferens. Okay, vas deferens को गले तो देखिए यूरेथ्रा को जीवन आसे. That's why this will help the temporary storage of sperms. And the cauda, देखो इटा है epididymis रो caudal region टा. The cauda will continue as vas deferens. That cauda will continue as vas deferens. So again मु मन पके दोची that this testis and epididymis. Okay, testis and epididymis makes the
testicle. Remember, if anyone asks, epididymis and testis togetherly called a testicle. Testicle doesn't mean only testis. It is the association of both epididymis and testis. And epididymis encircles the testis. See, one more important cell is the Leydig cell. Okay, so two different types of cells we have found. I mean, pailena seminiferous tubules re two type of amaro middle cells. Gote hoche amaro germ cell, agote hoche amaro germ cell, agote Sertoli cells. Another type of cell madhya ame dekhiba ko paiba, jota ki amaro hoche Leydig cells. Okay, तो मु कही ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन र काम होची ना गोटे फर्स्ट ऑफ ऑल से सिंथेसाइज करिवो मेल गैमेट ता सहित से कोन करे ना मेल सेक्स हार्मोन मध्य तयारी करे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन र काम कोन? टेस्टोस्टेरोन र काम होची इट एलिसिट बाय प्रोड्यूस करेबो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल इंडिविजुअल. ओके, तो फॉर देखो लेडिक सेल्स कोड देखा मिले इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स. गोटे आमर कंपार्टमेंट रे कौन थाए ना फर्स्ट ऑफ ऑल जम टिके रिकॉल कर दोची तो आमर जो देखिले जो लेयर्स थिले आमर डिफरेंट लेयर ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो थिला ट्यूनिका अल्बुजिनिया डिवाइड कला टेस्टिस को इनटू 200 to 300 कंपार्टमेंट बा कोन शेप्ड कंपार्टमेंट्स रे. ओके, सेही कंपार्टमेंट अगेन डिवाइड हेची से ईच कंपार्टमेंट रे अगेन थाए 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स. So in between the seminiferous tubules आमको कौन देखिए पे मिले Leydig cells. को cells? Leydig cells. तेणु जेहेतु से in between the seminiferous tubules देखिए पे मिले ताहाको interstitial cells मध्य कहा जाए. Interstitial means in between. So interstitial cells means Leydig cells which secretes function कौन secretes the male sex hormone, that is the testosterone. Okay, note it, very very important. Then सिमिलरली सो एटा गोटे हमर सेमिनिफेरस ट्यूबल, सपोज एटा गोटे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ए भितरे हमको देखे पे मिलेबो दिस आर द Leydig cells or the interstitial cells. Okay, so एटा हे गला अबाउट टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस बा टेस्टिकल. देन हमर वास्ट डिफरेंस रो काम कोन? वास्ट डिफरेंस होची से मध्य गोटे ट्यूब लॉन्ग ट्यूब जोरा के से कम करे ना कैरी करे स्पर्म्स फ्रॉम द कॉडा रू एक्सटेंड ला एपिडिडाइमिस रो कॉडा रीजन रू एक्सटेंड हेची वास्ट डिफरेंस कैरी करबो स्पर्म एंड जाय के से कहां से तो मीट करबो जाय के मिसेबो से सेमिनल वेसिकल रो डक्ट से. तो एबे हमें देखिबा ना देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स बा एक्सेसरी ग्लैंड्स जे की हेल्प करे, कहा को हेल्प करे ना माने स्पर्म को तार ट्रांसपोर्टेशन रे हेल्प करे एज वेल एज न्यूट्रिशन मध्य प्रोवाइड करे एंड तार फर्टिलिटी को मध्य मेंटेन करे, रखे सर्वाइबिलिटी को मध्य बढ़े दिए, स्पर्म मोटिलिटी को मध्य एनहांस कराए. ओके, सो एबे देखिबा ना डिफरेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो कौन कौन ग्लैंड्स अछि? गोटे अछि सेमिनल वेसिकल, आ गोटे अछि प्रोस्टेट ग्लैंड, आ गोटे अछि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बा कूपर्स ग्लैंड. ओके, वन बाय वन हमें डिस्कशन करबा. The first gland that we will discuss, जो हमें नेक्स्ट कंटिन्यू करबा accessory glands, माने those glands that will help to sustain the see now हमें डिस्कशन करबा first gland, that is the seminal vesicle. Okay, seminal vesicle से कौन ना convoluted pouch like structure. Structure कौन? Convoluted pouch like structure located behind the urinary bladder. Good location arrow behind the urinary bladder, and it is convoluted pouch like structure. Remember, it produces ये कौन तैयारी करे ना येलो viscous fluid गोटे तैयारी करे which is the major part of the semen. Okay, so major part consists of this seminal fluid or seminal vesicle fluid. It is yellow color and viscous.
Okay, so the viscous fluid is rich in कौन कौन अधिक थाए रे ना fructose थाए. ये question पचार थिला ना semen contains which carbohydrate, that is the monosaccharide is the, sorry, it contains fructose. Okay, and आउ कौन कंटेन करता है विटामिन्स मध्य थाए. ओके, along with that mucus मध्य थाए and prostaglandins मध्य contain करता है. Okay, this yellow viscous fluid contains fructose, vitamins, mucus and prostaglandins too. Next gland जो हम discussion करेंगे that is होची prostate gland. Okay, तो prostate gland होची hard glandular. Okay, it's too hard and यार काम कौन जानचो, it helps to propel the fluid during ejaculation to the urethra. Okay, जेहेतु ये hard in nature and urethra prostate gland रो center रे गोटे pore through देके pass करे, passes through a hole, मतलब गोटे pore देके urethra pass करे through the center of the prostate. Okay, and the nature of prostate gland location कौन, prostate gland is located below the urinary bladder. It is located below the urinary bladder. And unlike the seminal vesicle, यार fluid होची thin and white milky color, milky white. Okay, यार कौन milky white and thin fluid, not much thicker. Okay, and prostate gland major function माने जिमती हमें seminal vesicle रे just join हवा पूर्वरु देखी थिले जन डायग्राम तले देखी थिली. तो seminal vesicle जो vast difference आसीबो, vast difference seminal vesicle को join करिवा आगरु ampulla formation करे, and seminal vesicle रो duct and vast difference together they forms the common ejaculatory duct. Okay, that ejaculatory duct from each माने दुईटा पेयर माने गोटे पेयर थाए and that pair one from each side then comes to fuse with the urethra. कोटे ना prostate देखी urethra जाए कि मिसे कहाँ से होता ना the copulatory organ or the penis. Okay, then third gland is the, so prostate gland रो कामो कौन help कौन करिवो से ना जेहेतु ये alkaline in nature से कौन करिवो neutralize कर देवो the acidic media, because acidic media sperm survive करि पारेनी ना, that's why the acidic media को neutralize करेबारे मध्य prostate gland रो secretion help करे. Even vagina रे मध्य slightly acidic media थाए and urethra रे मध्य slightly acidic media थाए जोठी कि sperm survive करेबाटा difficult न हो केयर नहीं कि जो alkaline fluid ताको neutralize कर दी. Okay, third is the bulbourethral gland. Third gland is the bulbourethral or the Cowper's gland मध्य कहा जाएगा. Okay, bulbourethral or the Cowper's gland मध्य कहा जाए. तो bulbourethral gland कौन करे, it simply secretes mucus, but it secretes alkaline fluid. The fluid is alkaline in nature and ये मध्य neutralize acidic media neutralize करे वाले ही यार मध्य role था. Okay, so this is the different accessory glands that assist in reproduction. Okay, so now देखो what is semen then. So when the sperms are released from the testes where they are produced, ultimately transport करिया पड़िबो. So sperm को रो viability increase करिया पाई, sperm रो survivability को increase करिया पाई, तारो you can say the to enhance the motility of the sperm, this fluid plays a vital role, बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती. So किछि is along with the sperm, the secretions of seminal vesicle, prostate and the bulbourethral gland all together makes the semen. So semen is a alkaline
Okay, note it down. So semen kona? Semen is alkaline viscid fluid. Okay, semen is alkaline viscid fluid comprising of or consisting of sperm plus the secretions of accessory glands. Got it? So this is all about the male reproductive system. Now the question is, can you recall the sperm route and the how when कौन कौन जो sperm टा produce हला and transport हला से को route दे के आसला गोटे schematic idea देखो. First of all produce हला कोठी ना primary sex organ जो कि testis रू जाए से कोठी testis टा पुणे कोठी तेरेला से 1 minute seminiferous tubules रे तैयारी है. seminiferous tubules रू से आसला कोठी की रेटा testis. ओके, तो रेटा testis रू आसीबो epididymis through efferent duct. Okay, then epididymis रू से जीवो vas deferens. वास डिफरेंस अगेन कौन होगा? वास डिफरेंस ये कहाँ से तो मर्ज करेगा ना सेमिनल वेसिकल. इट मिस जाए कहाँ से तो डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल. देन से जीवो seminal vesicle पर formation करेबो the common ejaculatory duct. Okay, after that this common ejaculatory duct will join to the prostate gland. Prostate gland तले below the prostate gland की अच्छी bulbourethral gland. Okay, prostate gland और Cooper's gland बा bulbourethral gland रो secretion नबो तापरे plus Cooper's gland then जीवो urethra. Okay, then जाए urethra. Okay, this is the schematic diagram. Actually diagrammatically देखले जल्दी मन रह जाए, so note it down. Next आमे देखिबा एटा हेगला about the male reproductive system. So after this आमे देखिबा ना how the female body is adapted. किंतु जदि फर्स्ट वीडियो देखिथिबो चैप्टर रो जोटा कि आमे डिस्कशन करथिले स्टार्टिंग रे अबाउट रिप्रोडक्शन, तो आफ्टर ए सर्टेन एज मैच्योरिटी अटेन हुए and after that maturity certain hormone secretion हुए. reproduction is not only माने आमे कहि परिबा नै कि जे ये माने everything in our body, our body is every function is regulated by the endocrine system or system of hormones. Okay, तो एठी मध्ये hormones अछि FSH and LH follicle stimulating hormone and luteinizing hormone जे कि हेल्प करबो काहे रे ना दिस फंक्शन को रेगुलर सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स को रेगुलेट करे से. ओके, जेटा कि सीक्रेट हुए एंड द हार्मोन मु जेटा कहली हमरा कोन टेस्टोस्टेरोन और द एंड्रोजन जेटा कि दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल. in case of male individual that is testosterone or the androgen. Okay, so next is the female reproductive system. तो summing of the idea देखो
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रा काम कौन ना स्पर्म सिंथेसाइज करिवो एंड कौन करिवो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करिवो टू द वेजिनल ट्रैक्ट. ओके नेक्स्ट. Like the male reproductive system, female reproductive system consists of pair of ovary and the oviduct, uterus and the cervix, vagina. Okay. The primary sex organ of female reproductive system कौन कहती? That is the ovary. These are the pair of ovary. Okay. So from this ovary कौन तैयारी होबो? The female gamete. Okay. The female gamete is produced from the ovary. Okay. And the male gamete is synthesized throughout the life. In case of male, the male gamete are synthesized throughout their life after attaining puberty and begins at the puberty. But in case of female individuals कौन हुए? puberty रे start हुए, egg production start हुए, ova synthesis start हुए, that is known as the menarche. And in each 28 days from the beginning of the synthesis of the ova is marked by the menstruation cycle. So जेमती माने देखो ova production हबो ovum रे जेबे से प्रोडक्शन हबाटा स्टार्ट हबो बा ओवा प्रोडक्शन स्टार्ट हबो मैच्योर हबो सेते बेले इफ इट इज फर्टिलाइज जदि फर्टिलाइज हे जाए देन जाइगोट फॉर्मेशन हे कि इम्प्लांट हे कि बेबी प्रोड्यूस हबो एंड द लेडी इज सेड टू बी प्रेग्नेंट. बट व्हेन जेते बेले कोन हुए ओवा फर्टिलाइज हुए नहीं देन से कोन हुए डिस्ट्रॉय हे जाए बा that menstruation cycle begin हुए. Okay. So देखो in case of female individuals this menstruation marks the onset of puberty. So in each 28 days one ova is synthesized and the cycle, the fertility period is only up to 45 to 50. After the age of 50 again the egg production आउ हबनी, egg production ceases. This is known as the menopause. ठीक अछि. किंतु male individual रे एमती हुए नहीं. Male individual throughout their lifetime they can produce a male gamete. Okay. The fertility is lost or the egg production ceases after 45 to 50 years and this is known as the menopause. Okay. तो menstruation cycle discussion कला बड़े detail रे हमें देखिए ना how the process is carried out. जो ओवा रिलीज हम फ्रॉम द ओवरी ताको रिसीव किए करिवो दिस ओविडक्ट. ओके. सो ओविडक्ट को ना ओविडक्ट इज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बट तार गोटे एंड टर्मिनेट हेची इनटू अ फनल शेप स्ट्रक्चर. देखा होची ना एटा गोटे फनल शेप स्ट्रक्चर. दिस इज एमती फनल लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली एमती हिथिबो. दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर रे ए ओपनिंग टाको कहा जाए ओस्टियम. ए ओपनिंग टाको कोन कहा जाए ओस्टियम. एंड ए ओस्टियम रे बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थाए ताको कहा जाए फिम्ब्री. कोन कहा जाए ताको? दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्ब्री. ओके. सो ये जो ओपनिंग टा कहला ओस्टियम एंड दिस इज द फिम्ब्री एंड दे विल रिसीव द ओवम. ओके. तो the oviduct is again divided into three parts. Okay. This is the infundibulum, this is the ampulla, this is the isthmus. Okay. This region is known as this region is called the infundibulum, this is the ampulla, this is the isthmus. Okay. And isthmus continue to the uterus. Okay. But this oviduct or the fallopian tube, it is also called as the fallopian tube. This fallopian tube is held in position by
the mesovarium that is attached to the uterus. Okay, the mesovarium जो mesovarium जो uterus uterine wall को attached ही अच्छी से ही ए fallopian tube को तार place रे धरे रखिबारे help करे. Okay, next is the uterus. uterus रे थाए तीनटा layers जेमती हमें देखिथिले uterus रे मध्ये कोन थाए तीनटा layer थाए. तो first layer is the perimetrium. Perimetrium next layer is the myometrium. Myometrium next layer is the endometrium. Endometrium layer is highly vascular, richly supplied with blood vessels. Okay, and ये जो endometrial bed जो तैयारी हुए से जो बेबी इम्प्लांट हम बा जो इम्प्लांट हैला परे एम्ब्रियोटा इम्प्लांट हैला परे ताको से नरिशमेंट प्रोवाइड करे. ठीक अछि. सो दिस एंडोमेट्रियम इज हाईली वैस्कुलर. जेते बेले फर्टिलाइजेशन हुए नहीं बा ओवाटा रप्चर ही जाए देन दिस एंडोमेट्रियल बेड इज शेड अवे. दैट इज द मेंस्ट्रुएशन. ओके, सो इबे पे एतिके मन रखो ना यूटेरस हैज थ्री layers. Outermost perimetrium, one is the perimetrium, myometrium and endometrium. Okay, and it is situated in between the urinary bladder and rectum. Okay, in the pelvic region. मन रखो ये जाको की पॉइंट्स मतलब मु जाको पूरा की पॉइंट्स भाबे कहूची. सो ध्यान दियो the uterus is located in the pelvic region in between the urinary bladder and rectum. Okay, see, the uterus is again divided into three parts. Okay, the upper region is known as the fundus region. The upper region is known as the fundus region, and the middle region is known as the body. Okay, or the corpus. Corpus means body. This is the fundus region, this is the corpus region, and this region is the cervix region. Okay, the opening of the body to the cervix is the internal orifice. Is the internal orifice. काटा कोड़ा कोड़ा open है opening of the इटा होचे हमारा body region टा. Opening of body to the cervix is the internal orifice, and the opening of cervix to the vagina is the external orifice. The opening of cervix to the vagina is the external orifice. Okay, so what is the function of uterus? Uterus का काम कौन? Uterus कौन करे ना growing embryo को oxygen provide करे and nutrients मध्य provide करे. In turn से कौन करे embryo to waste material मध्य remove करे and से कौन करे waste material से carbon dioxide मध्य remove करे. So the vagina is the copulating chamber. So clearly देखो the vagina is connected to the cervix in the upper and opens through the vaginal opening. Okay, and the vaginal opening is covered by a layer of skin that is the hymen. Last one, that is the external genitalia. External genitalia. The external genitalia or the vulva. What is its function? Now external genitalia kamo, it allows the transfer of sperm into the body. Okay, ये allow करिबो the entry of sperm into the body. Okay, and the other thing is this genitalia also protects the reproductive organs from infectious organisms. Okay, so जेहेतु बहुत सारा reproductive disorders मध्य अच्छी, so these infections को reduce करिवा पाइन, this attack of the pathogens बाजे कोनो से गोटे infectious microorganism to बंचिया पाइन मध्य से माने गोटे protective barrier भला काम करते the external genitalia or the vulva. Okay, so they can first is the labia majora. Okay, labia majora is thick and fleshy. It is thick and fleshy. And they contain sweat glands and oil glands. ये कौन contain करता है? Sweat gland contain करता है and oil secreting glands मध्य contain करता है. And after puberty, the labia majora develops hair. But the labia minora. Next is the labia minora, unlike the labia majora, doesn't develop hair even after puberty, and labia minora is placed inside the labia majora.
लेबिया मेजरा नेक्स्ट रे के था लेबिया माइनोरा. ओके एंड लेबिया माइनोरा meets at the clitoris and यार काम कौन लेबिया माइनोरा सराउंड कर रखिबो the vaginal opening and urethral opening. Both the vaginal opening and urethral opening is surrounded by the labia minora. Next is the Bartholin's gland. This Bartholin's gland is लोकेशन कोटी वेजाइनल ओपनिंग रो साइड रे प्रेजेंट है. ओके एंड यार काम कौन इट सिक्रेट्स सम म्यूकस टू लुब्रिकेट द वेजाइनल वॉल. यार काम कौन फंक्शन इज टू लुब्रिकेट द वेजाइनल वॉल. एंड कौन सिक्रेट करे इट सिक्रेट्स म्यूकस. So mucus secretion helps in the lubrication of the vaginal wall. Okay. Clitoris मु कहले जेमते लेबिया माइनोरा जाय के मीट करे कहा को क्लिटोरिस को. Okay. The clitoris is the small sensitive protrusion. It is a small sensitive outgrowth you can say and is supposed to be homologous to the penis. Okay. And you know this is the overall idea about the female reproductive system. Okay, the ovary, which is the primary sex organ of the female reproductive system, how माने से केमती प्रोड्यूस करे गैमेट्स, केमती गैमेट सिंथेसाइज हुए. जेमती आमे देखिले टेस्टिस और जर्मिनल एपिथेलियम रो बाहर छि कोन स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट हो जे, स्पर्मेटोसाइट पुने स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ तयारी हो छि. ठीक सेमती एठी मध्ये कोन हुए जो ओवा छि, ओवरियन वॉल इज लाइन्ड बाय जर्मिनल एपिथेलिया. ओके अगेन दैट जर्मिनल एपिथेलिया रो केमती डेवलप हो छि ओवा. ओके ओके सो द ओवरी is distinguished into outer cortex, inner medulla. The outer region is the cortex region and inner region is the medullary region. But किछि मध्य boundary नहीं कि this region is the cortex and this region is the medulla. किछि मध्य boundary नहीं तांको. The outer region is simply called cortex and the inner region is known as the medulla. And the cortex contains the follicles and the germinal epithelium. Okay, corpus luteum मध्य corpus luteum and follicles germinal epithelium line करी करी रखी छी आकू. ओके भितरे follicles अछि and अछि कोना corpus luteum. But the medulla is richly supplied with blood vessels and nerves. Okay, medullary region of the ovary is richly supplied with blood vessels and nerves. So देखो एटा अछि germinal epithelium रो डेवलप होला उ साइड जेते बेले गोटे follicle mature हुए. Okay, that mature follicle is known as Graafian follicle. The mature follicle को कौन कहा जाए Graafian follicle कहा जाए. से Graafian follicle surface को आस के जेते बेले रिलीज कर दिए ovum. When ovum is released, then जहाँ रही जाए this is the corpus luteum. ओके ए corpus luteum कौन करिबो endocrine gland भलिया फंक्शन करिबो एंड से को हार्मोन सिक्रेट करे दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन. कौन हार्मोन सिक्रेट करे ये दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन. मन रखो द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द corpus luteum इज द प्रोजेस्टेरॉन. एंड कौन हबो इन केस जदी फर्टिलाइजेशन हुए नहीं. ओके देन कौन हुए दिस corpus luteum मध्य डिजेनरेट हो जाए. डिजेनरेट कि corpus albicans गोटे स्कार मार्क तैयार करे गोटे स्कार दाग टाइप रो गोटे हो जाए दैट इज द corpus albicans. ओके सो एटा हेला डिटेल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Okay, so now a comparative देखिबा मैं जस्ट खाली रिकॉल करबा कोन पढिले हमें. Okay, the primary sex organ in the female is the ovary. In case of male is the testis. Male gamete is the sperm and female gamete is the ovum. Okay,
And one question, which cell or which cell is producing the gametes, that is the germinal epithelia. Because देखो सेठी मध्य germinal epithelia लाइन है कितिला and एठी मध्य germinal epithelia रू ही follicles मध्य तैयारी हो जाए, ठीक अच्छे. And one more question, what is the function of Leydig cells? माने पड़ची Leydig cells को कौन कहा जाए, interstitial cells बोले मध्य कहा जाए, because they are present in between the कहेंगे समाने in between the seminiferous tubules. ओके जेहेतु से सेमिनिफेरस ट्यूबल्स मझिरे थांती तांको इंटरस्टिशियल सेल्स मध्य कहा जाए. एंड सर्टोली सेल्स रो काम कोन, दे प्रोवाइड द व्हाट, डू यू रिमेंबर, दे प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ. ओके एंड देखो नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन, लास्ट वन मोर क्वेश्चन. दिस corpus luteum produces which hormone, that is the progesterone. ठीक अच्छे. corpus luteum degenerate हेगला पर कौन तैयारी करे, corpus albicans. ओके सो नेक्स्ट वीडियो रे एटा हेगला अबाउट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट रे हम डिस्कशन करिबा गैमेटोजेनेसिस. ओके गैमेटोजेनेसिस से कौन देखिबा ना, जो स्पर्म एंड ओवम सिंथेसिस हुए से माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस से सिंथेसाइज हुए. तो ये हमें जस्ट जानिले ना जर्मिनल एपिथेलियम रू सृष्टि हुए, बट से केमिति सृष्टि हुए, व्हाट आर द स्टेप्स दे अंडरगो इन डिटेल हमें डिस्कशन करिबा. ओके एंड द स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स मध्य सेठी मु तुमको डिटेल रे बुझाई देबी. ओके जदि वीडियो भल लागिला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मध्य निश्चय करिवे. थैंक यू.